हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इमरजेंसी ड्रग स्टडी। इसमें हम लोग सारे ड्रग्स को एक इंडेक्स में पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स लिखा है, जैसे एट्रोपिन सल्फेट, फिनाइटोइन सोडियम, एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन, फ्रूसामाइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट, हेपारिन, फेनिरामिन मैलिएट एंड डेजॉक्सिन। सबसे पहले हम लोग का ड्रग आता है एट्रोपिन, जिसमें हम लोग इसको एक फॉर्मेट में बनाते हैं, जैसे कि ड्रग नेम, डोज, रूट, एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ड्रग नेम, जेनरिक नेम एट्रोपिन सल्फेट, ट्रेड नेम एट्रोपिन एट्रोडॉट, डोज, रूट, IM, IV एंड सबक्यूटेनियस और पर ओरल, डोज 0.5 to 1 mg and 0.04 mg per kg. Action: atropine is a muscarinic antagonist used through competitive inhibition of postganglionic acetylcholine receptor, and direct vagolytic action leads to parasympathetic inhibition of the acetylcholine receptor in smooth muscles. It is anticholinergic drug. Indication: anti-sialagogy, antivagal effect, organophosphate, muscarinic poisoning and bradycardia poisoning, antidote, bradyarrhythmia, control of rhinorrhea, of acute rhinitis and hay fever, relaxation of uterine hypertoxicity, management of peptic ulcer, treatment of closed head injury. Then contraindication: glaucoma, pyloric stenosis, thyrotoxicosis, fever, urinary tract infection. इसका साइड इफेक्ट palpitation, dilated pupils, difficulty swallowing, hot dry skin, thirst, dizziness, restlessness, tremor, fatigue, ataxia, hallucination, delirium, coma. Nursing responsibility: monitoring apical pulse prior to administration, assess the patient for adverse effect after administration, give the drug with food, monitor temperature in infant and children for atropine fever, avoid driving or hazardous activity, avoid becoming overheated or dehydrated during exercise or in hot weather. सेकेंड आता है फिनाइटोइन सोडियम। IV ओरली दिया जाता है। फिनाइटोइन सोडियम का ट्रेड नेम इप्सोलिन, जो कि हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, इप्सोलिन, और डोजेज है 10 to 15 mg per kg in adults. Action: phenytoin is a hydration derivative, a first generation anticonvulsant drug that is effective in the treatment of generalized clonic seizure without significantly impairing neurological function. Indication: epilepsy, tonic-clonic seizures, complex partial seizure, status epilepticus, trigeminal neuralgia, behavior disorder after neurosurgery. Contraindication: hypersensitivity to phenytoin, pregnancy, hepatic failure, certain blood disease, narrow angle glaucoma, familial short QT syndrome, stroke, Adams syndrome, heart block. Side effect: headache, feeling sleepy or drowsy, feeling nervous, constipation, sore or swollen gums, neurotoxicity, slurred speech, vomiting, lethargy, eventually coma and death. Nursing responsibility: administer IV slow to prevent severe hypotension, monitor injection site carefully, drug solution are very alkaline and irrigation, monitoring for therapeutic serum level of 10 to 20 milli equivalent per ml, give oral drug with or without food, if complain of GI upset, given with food, reduce doses, discontinue phenytoin gradually, monitor hepatic function. देन तीसरा ड्रग आता है एफिनेफ्रिन, जिसे हम लोग
जिसे हम लोग एड्रेनालिन भी बोलते हैं। इसका डोजेज है एडल्ट में 0.5 to 1 ग्राम IV। इंट्रास्पाइनल भी दिया जा सकता है 0.2 to 0.4 ml ऑफ 1:1000 solution in anesthesia, spinal fluid mixture and child injection 0.01 mg per kg। देन आता है एक्शन। एफिनेफ्रिन एक्ट एज बाइंडिंग टू अ वैरायटी ऑफ एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। Binding to adrenergic receptor inhibit insulin secretion by the pancreas, stimulates glycolysis in muscles. Adrenergic receptor binding triggers glucagon secretion in the pancreas, increased adrenocorticotropic. Then indication: anaphylaxis, acute asthmatic attack, asystole, pulse, less arrest, symptomatic bradycardia and croup। देन आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन: शॉक, ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, कार्डियक डायलेशन, एरिथमिया, ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज, नैरो एंगल ग्लूकोमा, थायरोटॉक्सिकोसिस, डायबिटीज, ऑब्स्टेट्रिक। साइड इफेक्ट: टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, हेडेक, एंजाइटी, एप्रीहेंशन, पैल्पिटेशन, diaphoresis, nausea, vomiting, weakness and tremor। Nursing responsibility: careful monitoring of vital signs is crucial. Monitored for heart rate, cardiac rhythm and blood pressure frequently. Use extreme caution when calculating. If blood pressure increase sharply, rapid acting vasodilator such as nitrate or alpha blocker can be given। देन फिर दूसरा ड्रग आता है नॉरएफिनेफ्रिन इंजेक्शन। इसको वेरेलिन या नॉर्मिट या नोरैड भी बोलते हैं। जैसे डोज है ओनली IV, डोज कितना दिया 0.05 to 0.015 mg per kg per minute। फिर है एक्शन: sympathomimetic class of drug is a vasoconstrictor that stimulate alpha receptor to cause peripheral vasoconstriction and increase blood pressure। Indication: severe acute hypotension, shock, cardiac surgery, post of low cardiac out and cardiac arrest। Contraindication: patient who are hypotensive from blood volume deficit, mesenteric or peripheral vascular thrombosis when using cyclopropane and halothane anesthetic। Then side effect: ischemic injury, hypoxia, bradycardia, arrhythmias, anxiety, transient headache, confusion, headache, restlessness, nausea, vomiting, respiratory difficulties, extravasation, necrosis at injection site, sweating, tremors, urinary retention। Then है nursing responsibility: monitor blood pressure and apical pulse continuously, cardiac defibrillator and resuscitation cart should be close by during infusion। Double check all concentration with additional nurse, monitor EKG and CBP। If patient is awake, instruct them to report headache और dizziness। देन आता है फ्रूसामाइड, जिसे हम लोग ट्रेड नेम लैसिक्स बोलते हैं। इसे एपोफ्रूजामाइड, लैसिक्स, फ्रूसाइड, नोरोसेमाइड और इटॉल भी कहते हैं। इसका डोजेज है 0.5 to 1 mg per kg slow IV over 1 to 2 minutes। May repeat once at 2 mg per kg slow IV over 1 to 2 minutes। Action: inhibit sodium and chloride reabsorption at the proximal and distal tubules and the ascending loop of Henle। Then Lasix is used to treat fluid buildup due to heart failure, liver scarring or kidney disease। It may also be used for the treatment of high BP। Indication क्या है? edema associated with CHF, cirrhosis with ascites or renal dysfunction, for hypertension or in combination with the anti-hypertensive medicine
medication. Then increased ICP, nephritis syndrome, hepatic cirrhosis. Then contraindication, contraindicated a patient hypersensitive to drug or any of its components, and in those with anuria. Use continuously in patient with hepatic cirrhosis. Patient with allergic to sulfonamides may also be allergic to furosemide. In pregnant women, USB only if benefit outweigh the risk of the fetus. Then side effect: vertigo, headache, paresthesia, orthostatic hypotension, thrombophlebitis, abdominal pain, hypokalemia, anemia, and muscle spasm. Nursing responsibility: monitor serum glucose and electrolytes intake and output, daily weight. Undesirable effect: fluid and electrolyte imbalance, review heart rate, BP and electrolyte, increase risk of orthostatic hypotension more slowly. देन दूसरा ड्रग आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम. हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम में है, इसको ट्रेड नेम हाइड्रोकॉट 100, वेलकॉट या इफकॉर्लिन भी बोलते हैं हम लोग. इसका डोजेज और रूट है. रूट इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और ऑरली. डोजेज 15 to 240 mg ओरल, फिर IM इन एडल्ट. उसके बाद एक्शन: हाइड्रोकॉर्टिसोन इज ए स्टेरॉयड मेडिसिन. इट वर्क्स बाय calming down your body's immune response to reduce pain, itching and swelling. Indication: collagen disease, systemic lupus erythematosus, dermatological disease, severe erythema, multiform allergic states, gastrointestinal disease, respiratory disease. Then contraindication: inactive TB, herpes simplex, infection of the eye, and infection due to fungus, intestinal infection caused by roundworm, strong yelloid. फिर फियोक्रोमोमाइस्टोमा, low thyroid hormone, diabetes, insufficiency of hypothalamus and pituitary gland. Then a side effect: feeling dizzy, weak or tired, headache, muscle ache, indigestion or feeling sick, diarrhea, swollen ankle. Nursing responsibility: establish baseline and continuing data on BP, weight, fluid and electrolyte balance and blood glucose. Then lab test: periodic serum electrolyte, blood glucose, HCl and HGB, platelets count and WBC and differential. Monitor for adverse effect. Be alert to signs of hypocalcemia. Advised to take plenty of water. Then दूसरा ड्रग आता है मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम सल्फेट जिसे हम लोग मैगसेल्फ भी बोलते हैं ट्रेड नेम में, मैग्नियन, मैगमैन, मैग्सोकेन. डोज IM और IV पर ओरल भी दिया जाता है. डोज IM 25 to 50 mg पर kg, वेरी स्लोली दिया जाता है 4 to 6 आवर. ये में एवरी 4 to 6 आवर में. ओरल 100 to 200 mg पर kg एवरी 6 आवर. Action: magnesium sulfate can act as a smooth muscle relaxant, possibly by blocking calcium mediated contraction, decreasing acetylcholine release from neuromuscular junction and reducing histamine induced airway spasm. Indication: to prevent seizure associated with preeclampsia, cardiac arrest, acute nephritis, stop preterm labor. Contraindication: don't taking medicine, democlosialin, doxycycline, tetracycline if taking magnesium sulfate. Then hypersensitivity, myocardial damage, diabetic coma, heart block, hypermagnesemia, hypercalcemia. Use cautiously with myasthenia gravis patient.
देन आता है साइड इफेक्ट, सर्कुलेटरी कोलैप्स, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, हाइपोथर्मिया, पल्मोनरी एडिमा, डिप्रेस्ड हाइपोटेंशन, फ्लशिंग, हार्ट डिस्टर्बेंस, इंक्रीज स्वेटिंग, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोकैलेमिया, विजुअल चेंजेस, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, confusion and anxiety. Then nursing responsibility, monitor vital sign, monitor serum electrolytes continuously, monitor renal function, BP, respiratory rate and deep tendon reflex. Use magnesium sulfate during pregnancy only if is life threatening emergency. Magnesium sulfate is safe in breastfeeding. Monitor respiratory rate, arrhythmias, hypotension and muscles weakness. Ensure doses with secondary practitioner. Calcium gluconate is the antidote. Monitoring for fluid overload. If any serious side effect, consult with doctor immediately. Then यहाँ हम लोग का मैग्नीशियम सल्फेट ख़त्म होता है. फिर दूसरा ड्रग है हेपेरिन. हेपेरिन डोजेज IV, सबक्यूटेनियस, पर ओरल रूट में. फिर डोज में 15 to 25 यूनिट पर kg पर आवर बाय IV. फिर 250 यूनिट पर kg 12 आवर subcutaneous action. It produces its major anticoagulant effect by inactivating thrombin and activated factor 10 through an anti-thrombin dependent mechanism. देन आता है इंडिकेशन. इंडिकेशन में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, पेशेंट विथ बायोपेरेस्थेटिक वाल्व, सिस्टमिक एम्बोलाई, वेनस थ्रोम्बोसिस एंड आर्ट्रियल फिब्रिलेशन. देन आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी टू हेपेरिन, पास्ट और प्रेजेंट हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्टिव ब्लीडिंग, लो प्लेटलेट काउंट लोअर देन 1 lakh per minute. Drugs such as NSAID, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन. देन आता है साइड इफेक्ट. साइड इफेक्ट में हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड हाइपरकैलेमिया, एलोपेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया इन क्रॉनिक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्ट्रोक, MI. फिर है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटर स्टूल एंड यूरिन फॉर ऑक्यूल्ट ब्लड, monitor decreased blood pressure, increased pulse rate, complaints to back or abdominal pain and a severe headache as these are sign of severe bleeding. Then monitor PT-INR result when bridging of warfarin, invasive procedure avoid. Then prepare protamine sulfate as an antidote for heparin toxicity. Consult doctor immediately for allergic reaction like swelling in the face or tongue or difficulty breathing. Advice to use electric razor, soft toothbrush where identification that inform the therapy. फिर और ड्रग आता है डाइजॉक्सिन. डाइजॉक्सिन जिसे ब्रांड नेम लेलॉक्सिन भी बोलते हैं. डोज एंड रूट है IM और IV पर ओरल. डोज एडल्ट में 8 to 12 mg पर kg. फिर 1 to 24 मंथ में 3 to 50 mcg माइक्रोग्राम पर kg एंड 2.4 to 3.6 mcg पर kg पर डे. फिर एक्शन आता है डाइजॉक्सिन बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड एंटी डिसरिथमिक इनोट्रोपिक एजेंट. डिजॉक्सिन इंड्यूस्ड एन इंक्रीज इन ICNA plus that will derive an influx of calcium in the heart and cause an increase in contractility. Then आता है इंडिकेशन, हार्ट फेल्योर, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन to increase myocardial contraction, control ventricular rate, supraventricular tachycardia, CHF and arterial flutter. Then आता है contraindication, acute MI, hypersensitivity to drug, ventricular fibrillation, myocarditis, hypomagnesemia, hypokalemia, Wolff-Parkinson's White syndrome. Then constrictive pericarditis, non-alcohol
intolerance. Then side effect: nausea, vomiting, diarrhea, stomach pain, fast, slow, uneven heat rate, then lightheadedness, bloody or black tarry stool, confusion, weakness, hallucination, unusual thoughts or behavior, breast swelling, blurry vision, weight loss, yellowed skin, rashes. देन आता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी: मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी, मॉनिटर रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन पीरियडिकली ड्यूरिंग थेरेपी, नोटिफाई हेल्थ प्रोफेशनल बिफोर गिविंग क्लोज. If patient is hypokalemia, instruct patient to take medicine at same time, not sharing medicine with other container. Advise patient to avoid taking antacid and antidiarrheal within 2 hours of digoxin. Review fall prevention strategies with older adults, and then advise to doctor if female is pregnant or suspected. देन लास्ट ड्रग आता है फेनेरमिन मैलिएट, जिसे हम लोग एविल बोलते हैं. डोज और रूट IM और IV ओरली भी दिया जाता है. रूट डोज में होता है 0.3 mg पर kg पर डोज, 6 to 8 आवरली पर ओरल. और IV एक्शन होता है एविल बिलोंग्स ऑफ class of drug called antihistamine. It works by blocking the action of a chemical messenger histamine. इंडिकेशन होता है ट्रीट एलर्जिक कंडीशन कॉज्ड बाय इंसेक्ट बाइट, स्टिंग बाइट्स. देन सर्टेन मेडिसिन, हाइव्स, रैशेज एंड स्वेलिंग, राइनाइटिस एलर्जी, कॉमन कोल्ड, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, स्किन एलर्जी, कंट्रोल मोशन सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग एंड वर्टिगो. देन कॉन्ट्राइंडिकेशन: एलर्जी टू फेनेरमिन, prostate enlargement, pregnant and lactate women, renal failure, taking myos, then newborn child and premature child, interaction with metoclopramide, digoxin, linezolid, atropine, high cholesterol lowering medicine. देन आता है साइड इफेक्ट. साइड इफेक्ट में एलर्जिक रिएक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्लरी विजन, डिप्रेशन, confusion, irregular heartbeat, leakage of urine, tinnitus, then GI disturbance and sedation. Nursing responsibility: avoid consumption of alcohol, not used during pregnancy and during breastfeeding. Avoid driving after taking this medicine. Consult with doctor if have problem of liver and kidney problems. Avoid contact with known allergens such as pollen, dust, etc. Exercise regularly, meditate, do deep breathing, and try progressive muscle relaxation technique to relieve stress. Maintain hygiene. Give only IM in child under 12 years of age. In overdose, consult with doctor. देन हम लोग लिखते हैं एक बिब्लियोग्राफी, और उसके बाद ये हम लोग का पूरा ड्रग स्टडी ख़त्म होता है.